cheap people buy cheap things. Plastic is cheap. Do you Okay. want to buy plastic? Now, the Ataware will be coming up with a strategy of marketing which would be very sarcastic, which would be directly hitting the ego of the end consumer. So let's say if I tell you, Ritu, you know what? This is a very good product. It is healthy. You have to use it. It is environment friendly, and all the social and environmental and health values behind it. You might use, you might not. Okay. Right? If I tell you, you know what, Ritu? You get lost. You do not have that IQ level. You do not have that level of thinking to use our product. You stay away from us. That will create more impact in your mind. Thank you, Puneet, for joining us. It's been a full circle for me because I know you since many years when you were conceptualizing Ataware. And I'm so happy that you are today on Vision Board under our campaign. And we are celebrating the green heroes of India. So, Puneet, the first thing I wanted to know from you is, can you take me to that day when you have conceptualized Ataware? What made you choose this product? Uh, as you know, every innovator has this wow moment or has this heart touching moment that drives him or her to think out of the box and find out a solution which is not there in the market. It takes me back to 2013. I was traveling and I saw something floating in River Yamuna. It was a long stretch of styrofoam plates. And that was a time when I thought I must do something. I started researching. There are loads of people who were making edible cutlery at that time. I studied their products deeply. I understood what their challenges were, what were they doing basically. I spent a lot of time, finding out the reasons of all those cutlery manufacturers, edible cutlery manufacturers, were not very successful or were not very popular even. And some of them were very popular, but the companies were not operational. So I spent this time to understand. It took me about 2013 till 2019, good 6 years of research, and the amount of time invested uh, to come up with something which is in the market, which is in the hands of people now. We are yet to tell our customers the other major benefits of the product, which are being just being edible. There are other benefits as well attached to the same product. So this is how the journey has been. This was the striking moment that changed the course of actions. For you? Yeah, that's interesting. So, Puneet, as a eco-conscious business, what are the five principles that you follow, to drive this business? Because I know compared to a different business, the ethical value will be little more. That's what I believe. That's what I feel. Yes. Is it so? Look, probably you're the first person who asked me this question ever since I've started Artaware. Uh, Whenever I tell anyone, whenever I introduce Artaware, be it to a government official, maybe to United Nations, or somebody to who is an environmentalist or a regular consumer, we tell them, look, there are certain core values behind the company. There are certain core values behind every product that we manufacture. So, well, I'll give you some of them. Number one is plastic pollution. Everybody knows. Now, loads of people only think when they think of plastic pollution, they only think the streets full of garbage has ample of plastic. But plastic pollution is majorly into our stomach. What do we eat? So when Ataware says plastic pollution, that means the amount of plastic that you eat every day, knowingly or unknowingly, or like you like it or you not. And second one is low income of farmers.
we all know what is the state of play farmers have in this country, and especially sugarcane farmers. Our core product, or uh, the life and soul of Ataware is sugarcane, because it is made of jaggery. Third one is pollution-free production. So no air, water, soil pollution. Forget about air, water, soil. We do not have noise pollution. Industry hasn't started talking about noise pollution right now. India, loads of people do not even know that noise pollution does exist. And then coexistence with nature. What happens to the product when you throw it anywhere? We don't want to change the habits of the people. We are yet to understand the green dustbin and the blue dustbin, but wherever you wish to throw, Ataware will give you that value. If you throw it in the oceans, if you throw it in the garbage, it never reaches the landfill. So it has coexistence with nature, zero contribution to landfill. These are four core values behind the whole idea of the company. We do not compromise. We have left couple of customers who could not grasp, could not understand what we are doing. Since we are very small, so it is very difficult to convince or to make them understand. But there are loads of people who understand. So four core values, let me repeat it once again. No plastic pollution, low income of farmers, so we help them to grow, zero contribution to landfill, and coexistence with nature. Fantastic. But I just want to add one more thing, because I know very intriguingly about your concept that you actually employ a lot of women in your organization, and you give, and not only I mean, you actually go to the smaller cities and you are planning to create a lot of employability factor. So can you tell me about that? Uh, the women empowerment part, I'm the only male member in the whole Ataware team. We've been talking to various uh, district level government officials, state level government officials. As we speak right now, I'm in Odisha, and I'm talking to the deputy commissioner who has invited me here for a week's stay to evaluate the district. Can we set up a manufacturing plant here? So there is a small district called Angul in Odisha. So the idea is it should be locally grown, locally manufactured, and locally consumed. So it will be local to vocal to global. Then it will give the impact. Now, coming to the women empowerment part, uh, I have no hesitation in saying this or accepting it. Uh, in my small journey with Ataware, I found more women who were far committed in terms of the hygiene standard and in terms of the quantity and quality of the work. So our focus will remain women empowerment. Gradually, we might be joining hands with a lot of NGOs. We might be joining hands with a lot of self-support groups. Technology is patented, so we'll outsource to them. Discussion is happening. We recently published our 3-year report card, so which talks about how much employment we generated, how much plastic waste we saved, how much farmers got benefit from us, how much water we managed to save. So this will grow gradually, and we will come up with these real-time numbers. Say, for example, you're buying one of our products, or you're at a cafe, and you're taking a cup of coffee in our cup. Now, with every cup of coffee, you will be able to see a live number, how much impact you have created. What is your individual contribution as a consumer, as a company? So both these things will be applicable. We've been talking to uh, this Indira Gandhi Airport, New Delhi, and we requested them, can we put a huge hoarding which talks about all those 4 or 5 values, and every time a consumer buys a product, the number increases itself. So it's a live running board which tells you all the sustainable values, which tells you all the social values, which tells you all the health values,
and it's a live number. It increases every time a consumer buys a product. So that's what we're planning to put across. That is so interesting because, Puneet, I believe, and tell me if I'm wrong, that human behavior, if they're incentivized, the behavior kind of gets better. So, for example, if we can incentivize or create a reward mechanism for the customer to use a more sustainable product, maybe that it will create a pool and it will create a chain, and we can see more efficient behavior as far as this kind of product is concerned, eco-conscious behavior is concerned. Am I right saying that? uh, I agree with you up to an extent. Governments have very less success rates so far Mm-hmm. in terms of making people aware, of making them more conscious. Let's take an example. It's a group of 100 people, and if I keep telling them you have to live more environmentally conscious lifestyle, probably they might not do it. Mm-hmm. So, Artaware hasn't started marketing yet, but the way we will market this is we would be hitting their egos hard. So let's say if I tell you, Ritu, you know what? This is a very good product. It is healthy. You have to use it. It is environment friendly, and all the social and environmental and health values behind it. You might use, you might not. Okay. Right? If I tell you, you know what, Ritu? You get lost. You do not have that IQ level. You do not have that level of thinking to use our product. You stay away from us. That will create more impact in your mind. Okay. If you hurt someone, he will remember you throughout your life, throughout his life. Mm. And if you flatter someone, they might not. So Artaware will be coming up with a strategy of marketing which would be very sarcastic, which would be directly hitting the ego of the end consumer. Mm-hmm. Say, give you a small slogan. Uh, Cheap people buy cheap things, plastic is cheap. Do you Okay. want to buy plastic? Now that's how we're gonna do it. Let's Mm-hmm. say there is a chai wala and he's using paper cups, plastic coated paper cups, and people come in and say, ये तो सस्ता है भैया, यही दे दो. तो वहां बड़ा बड़ा लिखा होगा, cheap people buy cheap things, plastic is cheap. भाई Mm-hmm. साहब मैं नहीं बेचता हूँ. So this is very small introduction of what we plan to do. There would be more slogans, more small advertisements, short videos that will hit the ego of the consumer. It's not making them aware. People are aware. There is enough information. Why they don't follow it? Because they do not get something in return. One. Now, when I say return, it's just not monetary value. It is more of social recognition that they want. Exactly. Right now, once you start humiliating them, then they gradually start taking it off, because government tried enough. We still don't know what is green dustbin and blue dustbin, Mm-hmm. and both of them are gone now, so there is no dustbin at all. We have to do something extraordinary to make people understand कि भाई साहब बर्तन इस्तेमाल करने के पीछे और भी reasons हो सकते हैं. Mm-hmm. What is your reason? So there are multiple reasons. What is your reason? If you do not have any reason, then you're not up to that mental status. आपका IQ लेवल उसका तरह का है ही नहीं. आप जाने दीजिए. आप सस्ती चीजें खाइए. प्लास्टिक सस्ता होता है. आप भी सस्ती विचारधारा रखते हैं. जाओ. So that's how we're going to position it. It's going to be very different and very entertaining once we start marketing, and these things will be out in the market. As you remember, when I was conceptualizing this, I met Yes. so many marketing professionals, and everybody said, पुनीत ऐसा किसी कंपनी ने कभी नहीं किया. People flatter their customers. ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा सरकाजम का बिल्कुल लाइट सा बैंटर मार देते हैं. कभी किसी ने अपने पोटेंशियल कंज्यूमर की ईगो को नहीं हर्ट किया. वी विल डू इट. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग. हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता. वो क्या कर लेंगे, नहीं खरीदेंगे ना प्रोडक्ट, ना खरीदें. Okay. So but can I counter this, because we are here Yeah, conversing? please. Because I believe that we have to create the system in such a way that people can, come and be aware. Now, I'm not saying that. I mean, obviously, there's a way of
reaching the customer, whatever. I do understand that. But if we create a more aware system, now when I say system, I'm talking about the different levels who are taking these decisions, right? So for example, I will tell you that all the co-working spaces or the offices are creating a lot of waste. I mean, I get appalled by when I'm saying this, because I get very conscious about it. Not that I'm not contributing to it, maybe I'm contributing to it too. But my thing is that if there is a system, this all these offices from coming from, say, government, or the system is coming that no, you have to do it, otherwise you will be fined. Do you think we'll be able to create a more sustainable process through that, if it is coming from from the above authorities? Look, putting a law in place Hmm. and then enforcing people to do it, that's government's job. Fine is in place. I'll give you a small example. Please. I was just going through news the other day, and I saw that NGT, National Green Tribunal, has issued a notice to all the restaurant and dhaba owners at GT Canal Road, Mm-hmm. right? All our Pahalwan ka dhaba and Amrik Sukhdev. In सबको they have issued a notice इनके waste generation. Now, this isn't going anywhere. I'm not blaming anyone, but it is very difficult. End of the day, the change comes to the mindset of the end consumer. Okay. एंड कंज्यूमर पैर रखकर अगर एक बार कह देता है ना कि सर स्टॉप इट, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। से फॉर एग्जांपल आप को वर्किंग स्पेस में गए, उसने कहा मैडम कॉफी, ठीक है, उसने जैसे ही प्लास्टिक के कप में, पेपर कोटेड प्लास्टिक में आपको कॉफी सर्व करी, हमने ये लूंगी, मैं इसमें कॉफी नहीं पीती, आई डोंट वांट टू ड्रिंक प्लास्टिक एनीमोर, मुझे नहीं लेना है। तो अपने आप जो बेचने वाला है, जो सर्व करने वाला है, वो अपने आप बदल जाएगा। इट हैज टू कम थ्रू द कंज्यूमर, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट इशू। ये सरकारी नहीं है, फाइन लगाने से कुछ नहीं होगा, करप्शन और ऊपर चलती जाएगी। 500 का फाइन है, अरे 300 दे देना यार, आगे बढ़ना। तो दैट्स नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इट इज मोर टू डू विद कि हम क्या करना चाहते हैं, हम करना भी चाहते हैं। तो दैट्स हाउ वी स्टेप बाय स्टेप। जब मैं ऐसा कुछ कहता हूं, इस पूरे सिस्टम में अगर कोई चेंज ला सकता है तो वो एंड कंज्यूमर खुद ला सकता है, not the agencies. If you see smaller markets, let's say Sweden, Netherlands, Holland, आप वहां देखो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट isn't doing anything. जो छोटी सी पॉपुलेशन है उसका अपना बिहेवियर चेंज होता है। आप सोचो छोटी सी पॉपुलेशन के बिहेवियर से उस कंट्री के पोल्यूशन पर, प्लास्टिक पोल्यूशन पर या एनवायरनमेंट पे इतना हंगामा हो जाता है। जब हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, अरे 5-10 करोड़ लोग भी अगर इंपैक्ट कर दे, 5-10 छोड़ो, 10 लाख लोग भी एक तरफ को चलने लग जाएं, इट कैचेस फायर वेरी। तो हमें वो, हम कंज्यूमर की तरफ फोकस है। ग्राहक इज द कंज्यूमर, इज द ड्राइविंग फोर्स। अगर कंज्यूमर कहेगा तो सब कुछ होगा। गवर्नमेंट का काम है भैया रूल बनाना, सब कुछ करना। हम द माइंडसेट, it really, marketing really comes down to, or awareness really comes down to the mindset. Give you an example. अब आटा वेयर ने, we studied all the parts of the country. If there is a new law about environment or about a traffic or anything, वो सबसे पहले दिल्ली में तोड़ा जाता है। People in Delhi take pleasure in breaking the law deliberately. That's their adventure, right? Now, भैया आउटस्पोकन है, जानबूझ के तोड़ते हैं। लॉ डज नॉट वर्क इन द माइंडसेट्स ऑफ दिल्ली पीपल। if you want to sell something or make them more aware, you have to hit their ego, you have to humiliate them, then they will understand. And if you go to other metros, it's not true. If you go to Ahmedabad or maybe to Bangalore, to Chennai, people are more polished. It's easy to make them aware and it's easy to make them follow the law. Comparatively easy. I'm not saying that they do not break the law or they do not have intentions to break the law, but it's comparatively easy.
So it is a different tweak to every strategy in every region that we will adopt, and that will help them to understand. Same things will not work in every culture. That's why we're not able to make awareness or make this plastic awareness or make this environmental awareness a very big thing, because culturally we are very diverse. Mm. Now, to make you more comfortable to adopt an idea, it has to be served, it has to be presented in the way you have that cultural attachment to. Okay. Okay. Right? As we speak, Durga Puja is going on. Yeah. Yeah. Right? अब मैं right now I'm in Odisha and I see so many Durga Puja pandals. कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है. राइट. अब मैं यही दुर्गा पूजा वाली स्टोरी अगर जाकर दिल्ली में कहूं कि हर पंडाल के पीछे कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते हो, तुम किस प्रकार की दुर्गा पूजा कर रहे हो, Mm. डू यू रियली थिंक यू विल गेट योर विशेस एक्सेप्टेड बाय दुर्गा जी, शायद दिल्ली वाले की समझ में नहीं आएगा. Mm. If I do the same, maybe in Bengal, Odisha, or इनकी neighboring states पे, that will really create an impact. हाँ यार, बात तो ठीक कह रहा है. तो हमें उसको समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस इज बेस्ड ऑन योर सोशल बाउंड्रीज, अवेयरनेस इज बेस्ड ऑन योर डाइवर्सिटी, अवेयरनेस इज बेस्ड ऑन वेयर आर यू बेस्ड, आप किस तरह के विचार रखते हो, कहां से आए हो. एक जूता सबको नहीं मारा जा सकता, नॉट पॉसिबल. अब वो दिन चले गए. So you are actually telling that the context is very important here. Yes, it Yeah, is. right. If we are setting the right context, maybe say what I understand from what you have said is that the cultural context of Durga Puja will be higher or understandably bigger, say in Bengal compared to say other Yes. cities or state. That's Yes. interesting. Puneet, I just wanted to know more about how do you create your product. It's very interesting, I know, and I want my audience to know about it. It will be interesting for them to know that आपका product actually jaggery से बना हुआ है, and it goes back to some, मतलब product is going back to after मैंने उसको use किया उसके बाद वो किसी का खाना बन जाता है. I find it very interesting. Tell us more about it. I'll give this answer in Hindi and English both. Please do that. बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, यार बनाते कैसे हो. बड़ी सिंपल से लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ. हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेक नहीं होता. हमारे प्रोडक्ट के अंदर आटा यूज होता था पिछले 2 साल से, 1 year and 8 months 9 months लगा ले, हमने आटा यूज करना बंद कर दिया. बिकॉज आटा हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ. वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है, 1 महीने के अंदर खराब हो जाता है. सो द न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज, बड़े बड़े गुड़ के चक्के बनाए जाते हैं, उनके अंदर अनाज डाल के, ऑलरेडी डाल के, द चक्का इज आर रॉ मटेरियल, और फिर उसे मेल्ट कर देते हैं. मेल्ट करके उसको मोल्ड में डालते ही ठंडा कर देते हैं, जैसे कुल्फी जमाते हैं, और वो निकाल कर आपको बर्तन बना के दे देते हैं. नाउ दैट रिक्वायर्स नो कलर, उसमें कोई किसी तरह का कलर नहीं डलता. जो ग्रेन का एक्चुअल कलर है, दैट इज द रियल कलर ऑफ द प्रोडक्ट. लेट्स से अगर वो सोरगम से बना है तो ब्लैक कलर का होगा, व्हीट से बना है तो ब्राउनिश होगा. अच्छा, देर आर नो प्रिजर्वेटिव्स, जरूरत ही नहीं पड़ती, गुड़ परफेक्ट है. देर इज नो ऑयल एडेड, हम एक बूंद भी एडिबल ऑयल डालते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है. बिकॉज एडिबल ऑयल मीन्स एक ह्यूज चंक ऑफ एडिबल ऑयल इज इंपोर्टेड इन इंडिया. Okay. हम मलेशिया से, इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगाते ही है, वही है हमारा एडिबल ऑयल. हमारा प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, सब कुछ इंडिजीनियस इंडियन है, मेड इन इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया, सब कुछ हमारा अपना है. गुड़ को पिघलाया, मोल्ड में डाला, डालते ही ठंडा कर दिया, निकाला और आपको बर्तन दे दिया. दैट्स इट. ये सिंपलेस्ट तरीका है. नाउ I'll explain this in English as well. How we make the product is just by melting the jaggery. Put that melted jaggery in the mold. It cools down with the help of instant freezers, and that's it. Your product is ready to use. That's the simplest way to explain the technology behind it.
And then there is a huge technology process, the software behind it, how to judge कितना गर्म हुआ कितना गर्म नहीं. That's something, for more technical mindset people to understand. ऐसे बनाया जाता है. नेक्स्ट इज कि हम अब कर क्या रहे हैं. हमने इस बनाने वाले प्रोसेस को हम माल बनाकर बेचने पे फोकस नहीं है. आटा वेयर इज नॉट फोकस्ड ऑन कि मैं दिल्ली में बनाकर और सारे दुनिया को बेच दूं. नहीं, आटा वेयर हैज मोर इंटरेस्ट इन दैट्स इट शुड बी लोकली मैन्युफैक्चर्ड. अगर मेरा कस्टमर बैंगलोर में है तो मेरा मेरा प्रोडक्ट बैंगलोर में ही बनना चाहिए. उसके पीछे कार्बन फुटप्रिंट नहीं होना चाहिए. दिल्ली से चल के बैंगलोर जाएगा, देन इट वुड बी अ ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट बिहाइंड द प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में देयर इज नो कार्बन फुटप्रिंट. वो जहां कंज्यूम होगा वो वहीं बनेगा, वहीं के लोकल अनाज से बनेगा, वहीं के लोकल लोग बनाएंगे और वो वहीं लोकली कंज्यूम हो जाएगा. तो वो इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी तीनों को वहीं का वहीं फायदा देता रहे. That's the idea of it. Now we've been talking to various people in various parts of the country, जिनके साथ हम एक joint venture कर रहे हैं, who will, buying the technology, और जो हमारे साथ joint venture कर कर हमारे साथ हाथ मिलाकर अपने शहरों में locally बनाएंगे. अब वो किसको देंगे? There are various types of people, various customers we have. Take an example, Indian Railways. करोड़ों चाय के कप लगते हैं. अभी मैं सिर्फ कप की बात कर रहा हूँ, चम्मचों की बात भी नहीं कर रहा, स्ट्रॉज की बात नहीं कर रहा, प्लेट्स की बात भी नहीं कर रहा. अभी मैं सिर्फ कप्स की बात कर रहा हूँ, which is just one of the products. We have 72 different products. One of them is a tea cup. करोड़ों कप लगते हैं एक दिन में. Is it possible to supply sitting in Delhi? No. You have to have रेलवेज के जितने जोन हैं, हर जोन में कम से कम एक यूनिट होना बड़ा जरूरी है. नाउ किसी का खाना बन जाता है, दैट वाज योर नेक्स्ट थिंक. यार मैं नहीं खाती तो किसी और का खाना कैसे बनेगा? करेक्ट. हमने इसको बहुत क्लोजली स्टडी किया. वी स्टडीड इट वेरी क्लोजली कि डस्टबिन का होता क्या है. एक रिवाज है. अगर आप सोशल मीडिया देखो, पीपल आर कंपोस्टिंग हर चीज. मेरे ये कंपोस्टिंग बिन है, मैंने ये डाला, मैंने वो डाला, इस कंपोस्टिंग से खाद बना दी, ये बना. सर, मैंने कहा इफ देर इज नो वेस्ट जनरेटेड, देर इज नो वेस्ट टू मैनेज. है ही नहीं, तो आप मैनेज क्या करोगे? सो देर आर टू पार्ट्स वेयर आटा वेयर विल फिट इन. लेट्स से मेरा कोई कंज्यूमर है और उसके यहाँ जो है लोग कप खाते हैं, कुछ हिस्सा खा लेते हैं, कुछ फेंक देते हैं. ठीक है, वी विल इंट्रोड्यूस दिस कि भैया हम डस्टबिन रख रहे हैं, हमारे कप यूज करके हमारे डस्टबिन में डाल दो. कंज्यूमर गेट्स अ लॉयल्टी प्रोग्राम, कंज्यूमर गेट्स अ किकबैक, कंज्यूमर गेट एनीथिंग, जो हम अभी बात कर रहे थे. यार उस डस्टबिन में अपने कप को खाने के बाद जितना आपने खाना है खा लिया, जो बच गया उसमें फेंकने का, आपको मॉनेटरी, सोशल, एनवायरमेंटल कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिल जाएगा. फैंटास्टिक. ठीक है जी. अब उस डस्टबिन का हम क्या करें? ठीक है जी, हमने एक और पैरेलल कंपनी खड़ी कर ली है. वो पैरेलल कंपनी की पूरी टेक्नोलॉजी खड़ी कर ली है. वो उस वेस्ट को उठाकर रीप्रोसेस कर कर पेट फूड बना देगी. डॉग्स और कैट्स का खाना उससे बन जाएगा. उस खाने को डॉग्स खा सकते हैं, कैट्स खा सकती हैं, काउस खा सकती हैं, वो वेजिटेरियन होगा. राइट नाउ इंडिया में जितना भी खाना आ रहा है, पेट फूड आता है, वो इंपोर्टेड है. दैट इज वेरी कॉस्टली. एक पेडिग्री की कॉस्ट 200 रुपए तक है, 200 रुपए किलो. मेरा वेस्ट डस्टबिन में से घूमकर मेरी फैक्ट्री में आता है और प्रोसेस होकर अगर 10 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए भी बैठता है, स्टिल आई कैन सेल इट फॉर 25-30 रुपीज पर केजी. मैं 50 रुपीज में बेच दूं, 100 में बेच दूं, स्टिल इट इज वेरी चीपर. द मार्केट साइज इज ह्यूज. इट वुड बी फार इजियर टू कैप्चर. ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है. सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी है, ये तो पेट्स की बात हुई. स्ट्रे एनिमल्स का क्या होगा? एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है, दे हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर स्ट्रे एनिमल्स. हमने डॉग फीडर्स देखे, हजारों कुत्तों को खाना खिलाने वाले देखे, दिन में 3-3 बार. उनका लॉजिस्टिकल चैलेंज क्या है? मैंने बहुत लोगों से मीटिंग्स करी हैं इनके बारे में. मेरे अपने क्लासमेट्स ही हैं जिनको मैं जानता हूं, जो दिन में 2-2, 3-3 हजार लोगों को खाना खिलाते हैं. मेरे पुराने ऑफिस के मेट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, वो ऐसा करते हैं. वो कोर्ट तक जाते हैं उनके राइट्स के लड़ने के लिए. तो आई आस्क्ड देम, यार तुम्हारा चैलेंज क्या है? बोले यार हम हर रोज खाना बनाते हैं, दिन में 3-3 बार. खाना बनाने वाले रखे हुए हैं, फिर उस खाना को बनाकर पैक करते हैं और फिर वो खाना जाकर वहां सर्व करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं.
हम उन्हें खाना सर्व करने जाते हैं तो जहां हम सर्व कर रहे हैं उस लोकेलिटी पे लोग झगड़ा करते हैं, यहाँ मत डालो, अरे यहाँ मत डालो, गंदगी मचाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एंड देन इट ग्रोज। मैंने कहा जी ठीक। तो बोले जी हम या तो राइस बॉईल करके ले जाते हैं या एग बॉईल करके ले जाते हैं, कुछ ना कुछ कुक्ड फूड ले जाना हमारे लिए चैलेंज है। फाइन, गुड इनफ। व्हाट वी हैव कम अप विद इज अ रेडी टू सर्व फूड। भैया हमारा चंक है, अगर आप 250 ग्राम देते हैं एक कुत्ते को या एक डॉग को 250 ग्राम दे रहे हैं, हमारा फूड उसके लिए 100 ग्राम बहुत है। Okay. राइट राइट, वी हैव दिस कपा नूडल्स आते हैं ना हमारे, हम गर्म पानी डालते हैं नूडल तैयार हो जाते हैं। सो वैसा ही हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें आपने पानी में डालना है पानी में डालो, रेडी टू ईट हो गया, दूध में डालना है तो रेडी टू ईट हो गया, बिना किसी चीज के ऐसे ही सड़क पे डाल दो तो वो उसको भी खा लेगा। Hmm. तो उनके लिए लॉजिस्टिकली वो इजी हो गया कैरी करना। भाई बार बार बनाना नहीं है, शेल्फ लाइफ अच्छी है, कहीं भी सर्व कर दो, कुछ मिनटों में खा के खत्म, कूड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि आप कोई गीली चीज डालोगे नहीं, कूड़ा होगा। तो ये हमारा आइडिया है उन लोगों के लिए विच वुड बी फार चीपर एज कंपेयर टू एनीथिंग दैट दे सर्व। पेट के लिए हो गया, स्ट्रे एनिमल्स के लिए हो गया। जहां हमारे डस्टबिन है ही नहीं, अभी जब हम डस्टबिन तक नहीं पहुंचे हैं, वहां क्या होगा, हम लोकल गौशाला को इन्फॉर्म कर देते हैं, Okay. भैया आपके लिए खाना आ रहा है, आप अपना डस्टबिन ले जाओ, बड़ा बड़ा नाम लिखो उस कंपनी का और ट्रैक्टर के ऊपर लोड करके ले जाओ, उनकी ब्रांडिंग हो रही है और आपकी गाय को फ्री में खाना मिल रहा है, दोनों पार्टी बहुत खुश। अच्छा, अब बोले जी अगर गाय खा लेती है गुड़, तो गाय को फायदा होता है 1000 गुना। अगर कोई स्ट्रे एनिमल जैगरी खा लेता है या वीट खा लेता है या sorghum खा लेता है, मक्का ज्वार बाजरा कुछ भी खा लेता है, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं। हमने उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट, उसकी सारी रिसर्च, सब कुछ बैकएंड पे रेडी रखी। अब हम कोस्टल एरियाज में जाते हैं, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, लॉजिस्टिकल भी नहीं है। जैसे मैंने अभी अंडमान में एक प्रपोजल दिया, अंडमान निकोबार आइलैंड है, आइलैंड से कूड़ा कंटेनर्स में लोड होकर लैंड पे आता है, उसको रिसाइकल करना है या उसको कंपोस्ट करना है या उसका कुछ भी करना है, उनके पास कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। अब अगर उस कूड़े का 50-60% पार्ट, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, 50-60% पार्ट जो है, अगर वो सिंगल यूज कटलरी ही है, वहां हम उसे रिप्लेस करते हैं, तो उस कूड़े को उठाने की जरूरत नहीं है, सरकार फेंक दो समुद्र में, मछलियां खा लेंगी, खत्म। Okay. जीरो पोल्यूशन कॉस्ट, हमारे पास उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हैं कि वो वाटर को पोल्यूट नहीं करता, किसी भी लिविंग एंटिटी को हार्म नहीं करता, मारना तो बहुत दूर की बात है, उनको बेटर न्यूट्रिशन बेटर हेल्थ देता है। Mm-hmm. तो इतना करने के बाद इट इज इजी, दैट्स हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग पोजीशन। इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हमारे हमारे पास और लोग भी हैं जो बिस्किट बेचते हैं, Mm-hmm. राइट, फॉर एग्जांपल बिस्किट कटलरी इज देयर इन द मार्केट। बिस्किट कटलरी बिना एडिबल ऑयल के नहीं बनाई जा सकती, बिना रेजिंग एजेंट के बिस्किट नहीं बनता। आप किसी बिस्किट को उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड का बेस्ट बिस्किट है सम कंटेंट ऑफ एडिबल ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स, रेजिंग एजेंट्स, उसमें होगा ही होगा, उसमें चीनी होगी ही होगी, और मे बी एक घटिया क्वालिटी की चीनी भी हो सकती है। Mm-hmm. जब आप उसको बड़ी क्वांटिटीज में अपने डस्टबिन में फेंकेंगे और उसको आवारा पशु खाएंगे, वो कुछ दिनों में मरना शुरू कर देंगे। टेक एन एग्जाम्पल, आई एम इन दिल्ली, 6.5 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, अगर वो एक कप चाय रोज पीते हैं और फॉर एग्जाम्पल वो 1% लोग जो हैं वो बिस्किट का कप खरीदते हैं, तो वो जो बिस्किट का कप है, 1% ऑफ दैट पॉपुलेशन विल जनरेट 6 लाख कप अ डे। Mm. ठीक है जी, 6 लाख में से अगर 1 लाख कप भी कोई गाय खाती है तो 10-15 दिन में बीमार होकर मर जाएगी। दैट्स वेयर हमने उस लेवल तक की रिसर्च कर रखी है कि हमारे प्रोडक्ट के साथ इट विल कॉज नो हार्म टू एनी लिविंग एंटिटी। को एग्जिस्टेंस विद नेचर जरूरी है ना, हमारी कोर वैल्यू है। हमने जो है उसको कहां तक रिसर्च नहीं कर रखा, क्योंकि जब हम क्वांटिटीज की बात करेंगे, जब हम एडॉप्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो ग्रेजुअली दैट विल कम टू इट। This is I do read lot about all these things, but it is adding so much value to my knowledge also. So thank you for that, Puneet. Uh,
what is your future plan with Attaware? I know you have told me a lot of things, but I really want to know where you are heading towards because I see a brighter future for Attaware. Look, I'll be very candid about it. It's been really, really, really tough journey for Attaware so far. Uh, there has been a lot of love shown by multiple people at various level. There has been a lot of emotional attachment by our users, and there has been a lot of support on social media. It's been, the whole team struggled so badly because when we started back in 2019, we got fully operational by January 2020, and within 2 months कोविड आ गया और हम फंसे, सब लोग फंसे थे। हमने उसे यूटिलाइज किया। आज की डेट में वेयर आटा वेयर स्टैंड्स, वी आर नॉट अ नंबर ड्रिवन कंपनी। पीपल से यार नंबर ड्रिवन नहीं हो, व्हाई? a lot of startups are valued on the basis of कि यार कितने टर्नओवर करते हो। फॉर अस इज कि हम कितना इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्केलेबल है, हम इन चीजों का आंसर करते हैं। राइट नाउ प्लान इज आटावेयर फुल टाइम इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है। देयर हैज बीन टॉक्स अबाउट इट। हमने 3 साल लगाए हैं रिसर्च करने में। सो 2022 हमने रिसर्च पूरी कर ली, ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। टेक्नोलॉजी पे कर लिया, रॉ मटेरियल पे कर लिया, और मार्केट पे कर लिया। ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो मार्केट रिसर्च का डेटा जो है वो सिर्फ इस तरीके से शो करती हैं कि यार लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे पास ऑर्डर पाइपलाइन है। वी हैव पीपल हु हैव साइंड अप विद अस। दे सेड यार तुम 6 महीने बाद माल दे देना, कोई बात नहीं, तुम 1 साल बाद दे देना। वी आर वेरी कमिटेड टू द थॉट दैट यू हैव। वी सेल थॉट, वी डोंट सेल द प्रोडक्ट। हम विचार बेचते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचते। ये हमारा आइडिया है। फ्यूचर इज वी हैव शॉर्ट लिस्टेड अबाउट 86 सिटीज। उस 86 में से भी हम जो है वहां पर फर्स्ट फेज में उनमें से जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा पाएंगे। आई एम टूरिंग, मैं हर जगह जा ही रहा हूँ जहां जहां से लोग इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। सो आइडिया इज टू हैव मल्टीपल यूनिट्स अक्रॉस इंडिया। दिल्ली में हमारे पास एक छोटा सा रिसर्च सेंटर है which is not meant for commercial production. So very soon we'll have a new factory coming up in Delhi, somewhere in Delhi NCR. और उसके बाद multiple factories across India. That's the plan Ataware has. Then probably we have going international as well. We have couple of distributors जो हम हमारे साथ हैं। एक यूके में है, डिस्कशन चल रहा है स्वीडन में भी किसी के साथ। तो देर आर मल्टीपल एरियाज जो वो लोग भी हो सकता है टेक्नोलॉजी हमारे साथ जो है वो ले लें और दे विल एंटर इनटू लोकल टू वोकल वाले प्रोसेस में वो भी आ जाए। सो दिस इज व्हाट आटावेयर हैज प्लान्स। आटावेयर ने 3 नए प्रोडक्ट शुरू करे हैं। सो ये हमारा वे ऑफ ऑपरेशंस है कि जितने साल निकलते जाते हैं हम हर साल एक नया प्रोडक्ट देते हैं। चाहे मार्केट चल रही है नहीं चल रही है, हमारी रिसर्च चलती रहती है। सो इस साल हमने 3 नए प्रोडक्ट रेडी कर लिए हैं, ट्रायल्स हो गए हैं। एक है सिंगल यूज एडिबल टूथब्रश। Oh, okay. और हम कहीं भी जाते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, टूरिज्म कहीं भी जाते हैं, वो ब्रश देते हैं। आजकल बैम्बू हो गया है। बैम्बू में भी जो है वो कार्बन वाले ब्रशेस होते हैं, नाइलॉन होते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है। हमारे ब्रिसल्स भी कार्बन नहीं है, नाइलॉन नहीं है। एक टाइम 2 मिनट से ज्यादा व्यक्ति ब्रश नहीं करता। इट रिक्वायर, हमारे टूथब्रश में किसी तरह का टूथपेस्ट, टूथ पाउडर इज नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ Mm-hmm. पानी में डाला, ब्रश किया, फेंक दिया, दैट्स इट। ये एक प्रोडक्ट है। अदर प्रोडक्ट इज फॉर टेम्पल्स। दिया जो हम आरती करते हैं, मिट्टी का दिया होता है, हमने उसको एडिबल दिया बना दिया। Wow. अच्छा. टेम्पल्स विल गो जीरो वेस्ट। अब जैसे दुर्गा पूजा में से हमने वेस्ट देखा तो क्या निकला, वो इतने सारे दिए पड़े हैं। अब दुर्गा पूजा का दिए का कूड़ेदान में ढेर लगा हुआ है, एंड पीपल आर वेटिंग के जी मैं बहते हुए पानी में इंतजार कर रहा हूँ कब गंगा जी में कूड़ा फेंक दूंगा, कब यमुना जी में कूड़ा फेंक दूंगा। एंड ग्रेजुअली हमारे सभी रिवर्स कूड़ा ही ढो रहे हैं हमारा। अगर वो दिया
अराउंड द सेम कॉस्ट, Mm-hmm. 25 पैसे से 5 रुपए के बीच में दिया होता है। अगर वो ही मैं इतनी ही कॉस्ट में उनको एक एडिबल दिया दे दूं, वो फेंके यार, गाय कुत्ता बिल्ली बंदर चींटी सब खा जाएंगे। हर मंदिर के आसपास बेचारे घूम रहे हैं, उनका पेट भर गया, देर इज नो वेस्ट जनरेटेड, देर इज नो वेस्ट टू मैनेज। इजी हो गया ना? Absolutely. ठीक है। Absolutely. द थर्ड प्रोडक्ट इज एन एडिशनल इनोवेशन इन आवर करंट कप। हमारा जो कप है, हम उसके अंदर एक न्यूट्रिशन की लेयर लगाने वाले, विल पुट एन एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेयर इनसाइड द कप। Okay. नाउ टेक एन एग्जांपल, वी बीन टॉकिंग टू मल्टीपल डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के पास 3 तरह के पेशेंट्स आते हैं, 3 kinds of patients are very frequent. One is kids, second is old age people, and third one is pregnant ladies. Okay. Or these doctors, they prescribe nutrition based medicines to them. आप आयरन ले लो, आप कैल्शियम ले लो, आप पोटेशियम ले लो, and so on. So let's take a pregnant lady. उसको खाना है पानी पूरी, उसको खाना है गोलगप्पा, चाट, पकौड़ी, और डॉक्टर कह रही है आयरन की गोली खा ले, तो वो खाएगी नहीं, मन मन मार के खा भी ले। अगर मैं उसे ये कहूं कि जी ऐसा है, ये मेरा बर्तन ले जाओ, आपको चाट खानी है इसमें खा लेना, आपको पानी पूरी लेना है इसमें ले लेना, आपको गोलगप्पा खाना है इसमें खाओ, मोमोज खाना है, जो भी खाना है इसमें खाना है, वन टाइम यूज है। बोले आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो जो आपको गोली देने वाली है, वो अपने आप मेरे बर्तन के अंदर जो लगी न्यूट्रिशन लेयर है वो आपके खाने में मिक्स हो जाएगी। Okay. So Okay. let's say your pani puri gives you calcium, potassium, magnesium, iron, everything that you want without destroying the original taste and flavor and the color and the fragrance of your pani puri. उसका काम हो गया यार. She's happy. Right. Same goes with kids. We chase after them. बेटा दूध पी ले, बेटा आयरन खा ले. What he's more interested in drinking soft drink, आइसक्रीम खिला दो, मुझे कुछ और दे दो. Fine, no problems, kid. आपको क्या खाना है? फ्रूटी पीनी है, सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, ये लो, इस ग्लास में पी लो, खत्म. So the nutrition that he's going to get from any other food product will be transferred into the same cold drink or soft drink or maybe an ice cream, anything he wants to eat, without destroying the taste, color, fragrance of the original food. It gets transferred into your body. And the nutrition layer that we're talking about is 100% natural. It will come from the farm and will come from the farmer directly. So these are 3 unique dimensions of the product that would be coming up in coming days. तो हमने इन पे सारा रिसर्च वर्क क्लियर कर लिया है, हमें क्या करना है वो सब कुछ हो चुका है. नेक्स्ट इज मोमेंट वी हैव दीज प्लांट्स रेडी, दीज प्रोडक्ट्स वुड बी लॉन्च्ड इन द मार्केट एंड यू विल सी देम इन एक्शन. So it is almost the end of the show, Puneet. But what I really like about your vision is that you don't mince word. Every word you mean, every word you say is very direct, and you really want people to be part of this thing. And I hope that Ataware becomes bigger and bigger, in the coming years. And I also hope that we understand the value of eco-conscious business. Thank you very much. Appreciate, and I really appreciate you took out time, and a lot of people in media do not remember who they met and when they met. So I so always remember it's my people. Yeah. a simple message to all our viewers is we are not a company who's afraid of losing. We'll be upfront, straightforward. This is who we are, this is what we do, this is the value that we bring to the table. If you follow us, if you understand, if we are on the same plane, or if we are in the same step, or if we have the same wavelength mindset, you are not our customer, you are part of our journey. That's how we think. It's very simple. We do not flatter customers. We say, yeah, साफ है, खुला है, यही है, ऐसा होता है, ऐसा ही होगा. And we are still learning. We are not afraid of accepting कि यार हमसे ये हो गया और वो नहीं हुआ.
ठीक है, कस्टमर का कोई भी जैसा भी फीडबैक आता है, वी आर गुड टू गो। Thank you. Thanks a lot, Puneet.